Hello, my dear students. How are you guys doing? So, sir, very important thing is that we have some examination guidelines. कुछ examination guidelines है which are being issued by ICMAI in this regard. तो अब जो examination guidelines है सर, ठीक है, examination guidelines तो हैं, पर एक बात समझाओ, why those guidelines are released right now? ना आज की नहीं है, आज की नहीं है. They are already available in general in the on the website of ICMAI. They are available in general. But things are like that nobody goes through those kind of examination guidelines. पेपर करना कैसे है, राइट? यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट सर. व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं इन चीज़ों पर, दैट हाउ टू अटेम्प्ट अ थ्योरी क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन अ थ्योरी पेपर, राइट? सो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं. नहीं दिख रही होंगी तो यहाँ पे एंड में एक आई बटन में लिंक मिल जाएगा या लास्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे देख लेंगे. सो मूविंग अहेड, there are certain examination guidelines which are all about that how a CMA student is expected to write his or her paper, how you are going to appear an examination. So that means कि कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, कैसे बाल करके जाने हैं. नहीं, I didn't mean that. What I mean over here is कि सर पेपर में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये इंस्टीट्यूट ने ही हमें बता दिया है. अच्छा, इंस्टीट्यूट ने ही बताया है? यस, इंस्टीट्यूट ने ही ये गाइडलाइंस को इशू करा और इंस्टीट्यूट ने ही हमारे को बता दिया दैट हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशंस और डू योर एग्जामिनेशंस. So they are straight away available on the institute's website. I will share the link as well. I will show you that where they are available. ठीक है, और कुछ हिडन जेम्स भी बता दूंगा, वेबसाइट पे देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना चीज़ों को. मूविंग अहेड सर, मूविंग अहेड अगली बात पे आते हैं. सो गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट इज एडवाइजेबल ऑल द टाइम, ये चीज़ें बहुत बार होता है क्योंकि देखो, एज यू गाइज नो दैट रियली वेल दैट यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स इन अक्टूबर. सो एज फार एज आई एम कंसर्न, अभी तक बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा, राइट? सिलेबस पूरा कर लिया होगा एंड यू हैव स्ट्रेट अवे मूव्ड ऑन टू प्रैक्टिसिंग दोज काइंड ऑफ आरटीपीज, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. previous year question papers. So now sir, if we talk about these kind of things, previous year question papers, ये सबको प्रैक्टिस करना जरूरी है. पिछले 2 साल के भी कर लोगे बहुत हो जाएगा. So they are saying sir, before starting your paper you need to have a quick glance, look at your question paper. शुरू के 5 मिनट निकालो और अच्छे से वहां पर देख लो कि हाँ भैया ये कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं. जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप सिलेक्शन करें, इट्स ओके, यू कैन सिलेक्ट योर आंसर्स लेटर ऑन एज वेल, बट प्लीज गो थ्रू विद द पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल. Go through with the paper first of all, check that each and every page is there, each and every, the numbering is proper, how many questions you know, right? And it is very simple and this is one of the, you can say, hard and fast rules है कि जो सबसे easiest question आपको लगता है एग्जामिनेशन में नहीं, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, पहले वो वाला क्वेश्चन करना है. Okay, and you are required to attempt that compulsory question. अगर देखो, if question number 1 is compulsory, and you are not interested in doing, you don't know about question number 1, और आप क्या ऐसा करते हो, आप इसको छोड़ देते हो, you are going to leave this question, then the probability you will be getting marks only from 80. Right, because it is a compulsory question. By not attending the compulsory question, your maximum marks अब नंबर 100 में से नहीं मिलने वाले, अब नंबर 80 में से मिलेंगे. Your marks will be limited to 80%. ठीक है, कह रहे सर अब एक और क्वेश्चन, if I am not going to attend the compulsory question, will my paper be considered valid? हाँ, आपका पेपर वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट? ओके, राइट. सो एंड व्हाट इज ओवर देयर कि सर जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, राइट देम प्रॉपरली, राइट? देयर शुड बी जस्ट बिफोर आंसरिंग ईच क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली वर्ड बाय वर्ड, बिकॉज ऐसे बहुत बार वी हैव सीन सो फार जस्ट एक नोट लगा होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो 1-2 वर्ड्स इंसर्ट करने के बाद द होल क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन विल चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन ट्वाइस, understand the meaning of each and every word, right? You can do, depending upon कि ठीक है, अगर एक बड़ा numerical question है, you can do the reading like 2 times, 3 times, 4 times, as much as you are comfortable with. और इसके अलावा ध्यान रखना, you are going to allot time for each and every question, depending upon, see, if you have been given like the question paper, if that stands for like 100 marks, it will come for like 130 marks. 130 नंबर का पेपर आता है, 100 मार्क्स का आपको करना होता है,
राइट, एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने अगर उसको करने में 40 मिनट्स लगा दिए सर, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फंस गया, राइट। on the basis of the numbers which are given to a particular question, you are required to give your time. Okay, okay, so sir, I mean, how much time should I give it? देखो इंस्टीट्यूट ने खुद ही कहा है, each and everything is given by institute itself. I don't know कि आपने ये पढ़ा क्यों नहीं. You can allot 1.5 minutes to per mark. If there's a question for like 6 marks, so that should get completed by within 9 to 10 minutes. ठीक है, 1 मार्क के लिए 1.5 minutes you can give, you can, I mean, you spend from your end. Okay, okay, but do remember the compulsory question, this compulsory question is very lengthy, so this can take your like 1 hour. It's okay, no problem at all. बट कंपल्सरी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है तो 20-25 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है. दिस कैन टेक अप टू 1 आवर. दैट्स ओके, नो नीड टू वरी, राइट. क्योंकि उसके बाद जब व्हेन यू विल कम टू नो अबाउट द इजी क्वेश्चंस, तो वो आप वहाँ पे यू आर गोइंग टू, आई मीन, मैनेज योर टाइम ओवर देयर. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू एनी पेपर विच इज अ ब्लेंड ऑफ, यहाँ पर आई मीन यू विल बी गेटिंग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन पेपर्स, दोनों क्वेश्चंस आते हैं. तो अटेंड द थ्योरी एट द लास्ट, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स में मार्क्स आसानी से नहीं कटते. ठीक है, न्यूमेरिकल्स को यू कैन सॉल्व इजीली. व्हेन इट कम्स टू थ्योरी इट नीड्स टाइम, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, देन यू हैव टू राइट. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हाँ न्यूमेरिकल की तरह आपने क्वेश्चन देखा और आपने शुरू कर दिया, नहीं. थ्योरी के अंदर यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू लुक आफ्टर द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट स्लोली एंड स्लोली. कि ठीक है, इसके बाद ये लिखना है, द फॉलोइंग पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स, आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू नीड टू गिव द कंक्लूजन. सो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर थ्योरी क्वेश्चंस एट द लास्ट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स. डू रिमेंबर, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ऐसा करना है, थ्योरी सब्जेक्ट में तो है ही सारी थ्योरी, राइट. ओके, now moving ahead, sir, impress the evaluator with the first answer if your answer to the boys especially. देखो, अगर आपकी handwriting, if you are writing like this, evaluator with first answer, if your handwriting is like this, believe me, even if you have 100% hands upon onto the subject itself, but if you are writing like a doctor, I mean, why you are doing CMA, my friend? Why you are doing CMA there? CMA करने क्यों आ गए? आप तो डॉक्टर बनने चाहिए हो. So it is very important to, I mean, impress the evaluator in terms of content, neatness. That means there should not be any kind of cutting, and presentation means the way you are writing your answer. आप अपना आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं. Okay, okay, getting my point? सर, अब बहुत बार ऐसा होता है दैट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, लेट अस से कि मैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ, आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. वन आंसर इज पेंडिंग, आई नो द आंसर बट आई डोंट हैव गुड टाइम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इफ आई हैव 5 पॉइंट्स ओवर देयर, आई एम गोइंग टू राइट द सिनॉप्सिस, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द समरी ओवर देयर, आई एम गोइंग टू राइट 2 lines, आफ्टर दैट आई विल बी राइटिंग द पॉइंट्स ओवर देयर, 3, 4, 5. I'll just write the points. I'm not going to explain those points. That means the synopsis. You know the answer, but you don't have the time. It's okay. ये आप synopsis ऐसे बना सकते हो. Just give them the headings. Headings वहाँ पर लिखकर छोड़. Okay? But ध्यान रखना, ठीक है? Only at end of, बिल्कुल आखिरी में जब आप पहुँच गए हो तो वहाँ पर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा इतने में that just because of lack of time this has been done. You know the answer, but you don't have to write a synopsis for the answer. Just write a summary. Okay, just like, और end में जैसे आप conclusion देते हो, just write the case study quickly, skip the facts, and after that give the conclusion, right? Or if you talk about any kind of numerical paper, उस point of time पर सीधा सीधा avoid the working notes, do the working notes on a rough sheet. It's okay. Do the working notes anywhere else. They are not important. Just give them the answer. Right? Now, moving ahead, when we talk about some numerical questions, we have paper like accounts, we have paper like costing, FM, taxation, right? So each and every time, leave left hand page to show the workings, assumptions and notes. So getting my point, left hand side is going to be your working sheet. Workings are for each and every answer, you are going to elaborate the workings on the left hand side page. Okay, sir, अगर मेरा आंसर ही राइट से स्टार्ट हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उस पेज को छोड़ दो वहां पे.
Leave one page whenever you are going to do any kind of working notes. Working notes should not be at the end, वो starting में होगा, आपको पता चल गया होगा. I mean your teacher must have explained these kind of things, right? And also state the currency in accountancy. Whenever the time permits, you need to mention the currency over there, just like rupees, dollar, whatever the amount has been given over there, right? Getting my point? And in case if you have taken any assumptions, तो उन assumptions को भी वहाँ पर mention करना बहुत जरूरी है. And at the end also provide the total columns for accountancy and costing paper. Either you are making any kind of journal entries, you are making journal, ledger, right, balance sheet, profit and loss account, any kind of financial statements, do not forget to make a total at the end, right? सर ओवर राइटिंग नहीं करनी है. ओवर राइटिंग कैसे होती है? जस्ट लाइक आई हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, तो मैं क्या करूंगा, इसको काट दिया, यहीं पर इसके ऊपर लिख दिया. Do not do this, don't do this. If you have any of the words like कि आप लिख रहे थे यहाँ पर overwriting, right? This was your word, and this has been missed. By you can say you need to strike it off. You have to write it again. Do not write above it. Just write after that. Just write after that. That should be followed. That should be following. Clarity is very much important. If the examiner is unable to understand that what you have written, that means you have not written. If he is unable to understand anything, that means your answer is not readable, that means you have not written the answer, right? Getting my point? Okay. Now in case if the balance sheet is not telling in the paper of accountancy, so what you are going to do, you are going to straight away apply the principle of double entry by ticking off the entries, right? Okay sir, okay, so I'm going to do that system, and after that at the end I'm going to check the totals, and if they do not tally at the end the totals as they come, and try to deceive the valuator, because by doing such kind of techniques, ये सब पढ़ा होगा आपने. Do not try to deceive the valuator in any subject, right? Do remember the people who are checking your papers, they are much smarter than you. मान लिया कि they were student at a point of time, but now they are even more experienced, right? So in that situation, if you want to deceive the valuator, just like you have done the question number 2 more than once, एक ही question को आपने एक से ज़्यादा बार कर दिया, so in that situation you have to pay the penalty, right? In case if you are even carrying some kind of, you can say, chits towards the examinations, that can also be very heavy. Okay. Now moving ahead, after that, if in case if you have the time, you need to check your answers with another method as well. If you have time, if you don't have time, तब तो सर कुछ कह ही नहीं सकते, right? Now moving ahead, apply the rule of rounding off for the decimals. In case if there is any figure which is, what is rounding off? Rounding off is like you got over here 90.29, so this is going to be 90.3, right? Whenever any figure is over there which is 5 or above, you are going to switch on to the next digit. Okay, so if the amount is like 89.58, so I can write 8 is more than 5, so I'm going to add 1 over here. 6 is more than 5, I'm going to add 1 over here, so I can write 90, no problem. I can write over here 90 approx, no problem. That is rule of rounding off. In case if any figure is of 5 and above, you are straight away going to round it. Okay, now when it comes to theory paper, how we are going to attempt theory paper? So it is very important to first of all read your question paper properly, make abundant proper use of the technique, right? And after that, answer to the point. It should be to the point and brief. फालतू की कहानी बात करनी नहीं है, वहां पर सिर्फ मुद्दे की बात करनी है. In case if you are mentioning any kind of points, present your points in a list rather than writing your points into a, you can say, paragraph format. Apart from that, also number your points, right? Instead of, you can say that instead of doing like this A, B, C, D, what institute is saying, you should mention 1, 2, 3, 4. There should be a numbering, right? Number the points numerically instead of alphabetically. Getting my point? Okay. And in case if you have any appropriate heading, right, for any appropriate heading, you need to discuss a long answer, give it a proper heading. Give a proper heading. Just like you have certain kind of sections in your mind. Sections होते हैं ना, audit में है, law में है, so वो section को बड़ा बड़ा ऊपर लिखते हैं,
right? Present examples, you can present your examples, you can give your illustrations, there is no problem, you will be rewarded for that, right? Underline the keywords in your answer, just like if we talk about like section number 135 of Companies Act talks about CSR, right? So आप क्या करोगे वहां पे, you are going to underline the section number 135, you are going to underline the corporate social responsibility, right? It is going to enhance your point. Once you are going to show the examiner that see this, I know this, I know this. मैंने देखा है when it comes to girls, वो करती हैं ऐसे, they are going to underline the same. It does not mean that you are going to carry a highlighter, वहाँ पे तुमने रंगोली बना दी वहाँ पे. It should not be like that, right? And when it comes to any kind of comparison which you are required to make, you need to tabulate that. Tabulate कैसे? एक table बनाते हैं properly, and after that you are going to mention first part over there, second part over there, make a proper table and do the comparison, right? And avoid writing long and descriptive answers. There should not be any need to write long answer. लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने हैं वहां पर, right? In case अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, see मैं फिर से कह रहा हूँ, these guidelines are issued by ICMAI. I am not the one who's taking care of these guidelines. They are issued by ICMAI. I am going to show you the proof at the end. In case if you forget some of the points, कुछ points ऐसे हैं जो आप भूल गए हो, तो कोई बात नहीं सर, leave some space, you can return later and you can recollect those points later, right? In case, in matter of a case law, right, if you are sure of the case law and section, provide them in the answer sheet. But in case this, I have been telling you guys from so many years, right, कि बेटा अगर थोड़ी सी भी क्वेश्चन में या आपको सेक्शन में या आपको केस स्टडी के अंदर थोड़ा सा भी डाउट है तो मत लें, right? Same is for eco, same is for law. If you are going to mention any section, any theory, and if you are confused कि सर यहाँ पे ये सेक्शन लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, avoid it. Straight away avoid it. Do not write the section if you have any kind of confusion in your mind. Right? Okay. And when it comes to final students, they are expected to give good practical examples, application areas, and good criticism of the subject matter in case if you get any kind of such topics. ठीक है, कंक्लूजन देना तो जरूरी है. यू कैन ऑल्सो गिव, आई मीन, सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन एरियाज इन द what do you call it as in the practical life, just like, I mean, I've been telling you guys all the time, forms भी मैं आपको बताता ही हूँ that this form is applicable, this form is applicable in practical life, right? तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना. Enter the examination hall with the proper optimism, positive energy, and the challenging spirit. Keep your watch in your hand, right? If you are panicking, see, if the question paper is over there, right? If the question paper is, you can say, difficult, the marking is going to be easy. If the question paper is easy, the marking is going to be difficult, right? Your total concentration should be on the subject itself. That is all about whatever you have done, whatever the hard work which you have done so far from like last 6 months, 12 months. Now it is the time to do that. Take the challenging spirit and go ahead. Make it a boom, right? Now moving ahead, sir, अब आंसर लिखने से पहले take a deep breath, right? You will take extra oxygen, and after that, taking extra oxygen, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो, it is going to activate your brain and nervous system, which in turn activates your brain and nervous system. Okay. In case if you are going to fail, if you know कि सर नहीं, हो गई है गड़बड़, I cannot pass this examination, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे, मेरे साथ भी हुआ था. I believed somehow कि हाँ यार ये वाला पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से my whole group, I'm going to fail. Right? Never give up upon the examination. Make the best of the situation. Even if you think you are going to fail, you don't know miracles are there. Right? You just need to put in your best efforts. That's it. Right? And apart from that, right? Do not give any kind of personal message to any kind of, to any examiner. आपने वहाँ पर number लिख दिया कि pass कराओगे तो I'll give you 10,000 rupees reward. Contact me on this number. No. Right? And whenever you are doing your answers, whenever you are, writing your answers, reserve last 5 to 10 minutes for the revision purpose, so that you can go through with your answers, you can look after, you can identify, you can determine the blunders which you have made. Or in case, बहुत बार ऐसा होता है, आपने कोई ब्लंडर कर दिया, आपने क्वेश्चन नंबर को सही नहीं लिखा, so last 5 minutes should be over there to revise those kind of things. उसको रिवाइज करने के लिए वहां पर टाइम होना चाहिए. मान लो there is a very small difference. The people who have scored like 45, 48, 49, 47, they know the value of getting pass. Sir, we get pass on 40 as well, I know that,
I could have given example like this: the people who have scored 37, 38, 39, right, 35. They know there is a very slight margin between getting pass and getting fail. If you have, maybe there's a probability ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने आपकी अपनी आंसर शीट को रिवाइज किया होता तो सही हो गया होता सब कुछ, right? And please also inform your faculty of your result. Whenever your result comes, inform us at Supercrafts. We will do the best for you. देखेंगे फिर उसके बाद अगले एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, right? That's it what I wanted to share with you guys. But apart from that, I would also like to share one more thing यार. एक और चीज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ यहाँ पे, right? Okay. So this is what you can see over here कि ये है आपकी guidelines for students, right? So ये already institute की website पे दी हुई है, मैं अपनी साइट से नहीं लाया हूँ. Apart from that, these are the question papers. अच्छा, एक और चीज देखो, ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है जनरली. दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर looks in reality. I know this is December 2019 question paper. So this is answer all bits of questions at one place. And apart, see, one more thing I would like to add over here. वो क्या है सर कि in case if you come to know about like there is a question number 3 which is over there in 4 parts. 4 parts के अंदर वो है, तो चारों parts को वहीं पर आंसर करना. It should not be like that you are going to answer 4 parts, 3 parts at one place and 1 part at the last page itself. Each and every bit, each and every part of the question paper should be answered at the same place, at the same place itself. ठीक है. और ये है आपका एग्जामिनेशन वाला. उसके बाद इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, राइट. सो व्हाट यू कैन डू विद द सजेस्टेड आंसर्स कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू आर गोइंग टू क्लिक अपॉन न्यू, जस्ट एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर द इमेज, यू विल गेट ईच एंड एवरी सजेस्टेड आंसर विद यू विल गेट योर सजेस्टेड आंसर्स. ठीक है, बस दैट्स इट. दिस मच वाज ओनली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कन्वे टू यू गाइस कि ठीक है, आप पेपर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून्ड. बाय.